चलो न्यूमेरिकल्स करेंगे. So numericals based on the potential due to concentric sphere and shells. Concept is same center वाला. It can be 2 shells, 3 shells, 4 shells ऐसा. Okay. उसका basis में questions पूरा वन वर्ग के करने वाला है. And many questions came in mains. Okay. First question. There were 2 concentric conducting shells are there. R1, R2. Radius is R1. रेडियस R2. इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज Q2 है. ये फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल. ओके. फाइंड द पोटेंशियल R फ्रॉम द सेंटर वेयर R इज लेस देन R1. लेस देन R1 इज पॉइंट किधर है? वेयर आई हैव टू फाइंड द पोटेंशियल हियर. लेस देन R मींस हियर. मान लो द पॉइंट P इज हियर. इस पॉइंट में मुझे पोटेंशियल चाहिए. यू टेल मी पोटेंशियल एट पॉइंट P will be because of which charge? Q1 or Q2? Because of Q1 potential will be there, because of Q2 potential will be there. Both. Both. Because potential will be there for both. Okay. Now tell me, so I can tell because of first shell cable potential will be there, and because of second shell potential is there. Okay. फर्स्ट शेल के वजह से दिस पॉइंट इज इनसाइड पॉइंट और आउटसाइड पॉइंट? इनसाइड पॉइंट. फर्स्ट थोड़ा डिटेल में कर देंगे, बाद में डायरेक्टली कर दो. फॉर सेकंड शेल दिस पॉइंट इज इनसाइड द शेल. इनसाइड शेल. ओके. नाउ टेल मी व्हाट इज द बिकॉज़ ऑफ फर्स्ट शेल व्हाट इज द पोटेंशियल इन दिस पॉइंट P शेल है? Kp by R1. P वाला डाइपोल वाला. Q1 और Q2? Q1. So Q1 by small R1. R1. Radius डालेंगे, right? Inside will same, right? Q1 by R1 plus now for second shell this point is acting like a inner shell, inner point only. उसका कितना होगा सेकंड शेल की वजह से? K Q2 by इसका कितना आएगा? R2 because रेडियस है ना, रेडियस यूज करेंगे. खत्म. दिस इज आंसर फर्स्ट वन. नाउ डू दिस वन. So very much draw the picture. कैपिटल R means कैपिटल R का यूज करो, स्मॉल R means स्मॉल R यूज करो. उसका रेडियस ओनली वी शुड पुट. So second one, R is greater than R1, less than R2. मतलब greater than R1 and less than R2 means point P is here. This is R. Now again potential will be there because of two things, two shells covered. Potential at point P, this must be there. V1 plus V2. Now first shell के वजह से the point P is outside. What is outside? And for second shell के लिए the point P is inside. V1 कितना होगा? फर्स्ट शेल की वजह से R डिस्टेंस दूर में V1 by R. Q1 by क्या कर रहा मतलब R1 आ रहा R. And for second shell के लिए this point is inside. That use radius K Q2 by R2. Fine. Third one. Is it K Q1 plus Q2 by R? Oh yes, sir. आया third one तो समझ ना. पता करना शुरू third one. ये वाला क्या करेंगे? R is greater than R2 means so greater than R2 will be like this. इस point में. तब भी समझे the potential at point P is because of V1 plus V2. For both cells is outside only. not tell me something. इसका इस potential की वजह से इस sphere की वजह से इधर कितना होगा? KQ1 by R. KQ1 by R plus
For this shell, this Q2 point, by R. K2 by R. So you should be very careful. Small r, capital r, कौन सा radius है, everything we should take care of. चलो, no problem. Okay, come on. 3 concentric shells are there. उसके charges also given Q, Q2Q, 3Q. First shell, second shell, third shell. Okay, radius also given to you. Find the potential at the surface of second shell. इस सरफेस में मुझे पोटेंशियल चाहिए. It is there is 2r is there, right? Smaller is the 2r, right? नो फाइंड करो उस पॉइंट में. उस पॉइंट में पोटेंशियल इज देयर बिकॉज ऑफ फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल. ऐड करो. आगे सर. ओके, the concept. For first shell, it is outside point. For second shell, it is surface, and for third shell, it is inside. Also, again, सबसे बोलो. हाँ बोलो. K into 2Q by R. K into 2Q by R. No, wrong. Shyam. But tell me, for first shell के वजह से ये outside point है ना? Outside point कितना होगा? K Q by distance smaller is how much? 2R. 5Q by R. 5Q by no plus for second shell. सीधा बोलो. For second shell, this point is acting like a surface point. Surface point का फॉर्मूला क्या है? K 2Q by surface में क्या है? We have to use radius, right? इसका radius is what? 2R. And for third, 5KQ by 2R. 5KQ by 2R. Okay. Now third shell, this point is like an inside point. Inside point का K 3Q by इसका radius कितना होगा? 3R. श्योर अंडरस्टैंड करने का. Outside point we should use smaller. Inside and surface में we should use capital only. मतलब radius जो देगा वो use करने का. Outside only smaller. That's it. तो मेरा चलो करो. Okay, now we'll go for the electric potential due to non-conducting sphere. Non-conducting sphere. इसके बाद पूरा क्वेश्चंस करेंगे इसका उसके बेस में. मीडियम डेरिवेशन, राइट? नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा? चार्जेस पूरा भर के रहेगा, राइट? तो चार्जेस पूरा स्प्रेड यूनिफॉर्मली. इसमें सरफेस पे नहीं है ना, सरफेस पे नहीं है. टोटल चार्जेस विल बी स्प्रेड यूनिफॉर्मली. मुझे क्या इंटरेस्ट है? आई वांट टू फाइंड द पोटेंशियल एट आउटसाइड सरफेस एंड इनसाइड पॉइंट में चाहिए, राइट? नो फाइंड करो. इधर से r डिस्टेंस रूल में मस्ट बी ट्राई टू फाइंड आउटसाइड. इस पॉइंट p में वी वांट द पोटेंशियल. इसका रेडियस इज r. ओके, सॉरी वीडियो स्टक. हाँ, मुझे आउटसाइड पॉइंट चाहिए. आउटसाइड के लिए सेम वी डन द रिलेशन, वी आर यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन a potential difference and electric field. Small r is greater than
Step 1. We are trying to find the potential at that point P. Okay. So we know the relationship between the potential difference and electric field. Yaad hai? What is the formula? Delta V is equal to minus integral E dot dr. E dot dr from where to where we see. These are relationship, right? Potential difference and electric field. Now potential difference के लिए we require 2 points. We did last class में. We require 2 points. उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? We went to infinity and we are bringing the charge from here to here. Okay, 2 points there. Now tell me what is the potential difference will be? Vp minus V infinity here. V infinity minus Vp here. Potential difference will be. Infinity से P तक आ रहा है. So final minus initial is equal to minus integral from where to where we will integrate? From infinity to P. From infinity to P. Now, can you remember this formula? Because of a non-conducting sphere, electric field is how much? Outside point में electric field is. Outside point is acting like charge is at center only. So कितना होगा electric field? Electric field चाहिए. बोलो. KQ by R square. KQ by R square. Because देखो outside तो favorite सबका. KQ by R square, KQ by R वही है, point charge only. Okay. तो electric field की जगह पे वो use कर रहे हैं. KQ by R square. Okay. dr electric field same direction में ले रहे हैं. dr electric field cos 0 1 होगा. Cos 0. And P is nothing but कितना है? R distance है ना. So इधर से P के जगह में R लगता है. now integrate करो. Integrate कर लो. इधर 0 है. KQ will be coming outside. R square का integration करके upper limit minus lower limit करो. So VP is equal to minus KQ minus 1 by R आएगा ना. Minus 1 by R from infinity to R. So minus of minus plus हो जाएगा. KQ 1 by R minus 1 by infinity. 1 by infinity is 0. So it is KQ by R. देखो potential at outside point. मतलब conducting होने दो, non-conducting होने दो, anything sphere का outside point is like point charge at center. KQ by R. That is easy. Outside point is easy. And outside point आ गया तो surface point में surface कितना होगा? Small r is equal to capital R. Therefore, V at surface is KQ by capital R. KQ by capital R. Now, major thing is inside वाला. Inside वाला थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा. आया? Now inside क्या करेंगे? Inside is nothing but R is less than capital R. So this is a non-conducting sphere, solid sphere. मुझे center से smaller distance zone में I want to find the potential at point P. Now we are using same relationship between potential difference and electric field का relationship only we are using. Okay. उसके लिए 2 points चाहिए. Here we cannot take infinity. We cannot take infinity. We are taking surface. Right? Surface से we are going to the point P. And R vector is same direction में लगा रहा हूँ because R is like this, right? So electric field and R vector, dr vector will be in the same direction. Okay. Now लगाओ potential difference. They are going from surface to point P. So delta V is equal to minus integral E dot dr. Potential difference is Vp minus V at surface is equal to minus integral from surface to point P is nothing but R E dot dr. Okay. Electric field inside non-conducting में total 0. KQ. KQ small r. ईशा काम है आज बोलो ईशा. Electric field inside में
नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. हाँ. KQ by small r square. नो, क्योंकि बस पास कर रहे हैं. देखो साइलेंट रहता है इसलिए ऐसा रहेगा. हाँ साथी कहाँ से वीडियो श्रीराम ट्राई करेगा. नो 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 डोंट आस्क सर उसके बोलेगा राइट. हाँ साथी टेबल में फॉर्मूला electric field inside the non-conducting sphere. टुमारो मैं क्विज लगाने वाला हूँ सुबह फर्स्ट 10 मिनट्स. ये फॉर्मूला इधर तक जो भी है देखते हैं. एक एक को पूछूंगा. नो टीम सेटिंग है. एक एक को पूछने वाला हूँ. कौन जीतेंगे देखेंगे. नहीं तो काम में आराम से एंजॉय कर रहे हैं. ओके अटल भी सामने कितना के क्यू स्मॉल आर बाई R cube. आर क्यूब. गुड. पढ़ रहे हैं. ओके के क्यू स्मॉल आर बाई आर क्यूब dr and electric field and dr vector is in the same direction, so cos 0. Now we know at surface में what is surface is nothing but कौन सा point है. surface nothing but radius, right? surface nothing but radius, so s के जगह में I am taking radius. okay vp is equal to surface का point क्या होगा k q by कैपलर. सरफेस का तो ये है ना k क्यूब बाय कैपलर. वी डिराइव्ड बिफोर. नाउ इंटीग्रेट. सो k क्यूब dr करना. कैपलर क्यूब विल बी कमिंग आउटसाइड. k क्यूब माइनस k क्यूब कैपलर क्यूब. इंटीग्रल ऑफ r dr कितना होगा r स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम कैपलर टू स्मॉलर. और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगो कितना होगा Vp minus k cube by capital equal to minus k cube by r cube into upper limit means a2 bar ले लो. upper limit means r square minus capital. Okay. Now bring all one side and find calculate and find Vp. You bring all one side, take common. तो बड़ा फॉर्मूला आएगा. बड़ा फॉर्मूला है बहुत लर्न करना पड़ेगा. माइनस के क्यूब आर स्क्वायर बाई 2 आर क्यूब माइनस ऑफ माइनस प्लस के क्यूब कैपिटल स्क्वायर बाई 2 आर क्यूब. इधर लिखा है तो प्लस के क्यूब बाई कैपिटल. सो इफ आई टेक ए कॉमन, इफ आई सॉल्व दिस वन, इफ आई टेक ए कॉमन, पोटेंशियल कितना आएगा फाइनल आंसर लिख लो. के क्यूब बाई कैपिटल 3/2 माइनस हाफ r square by कैपिटल. दिस इज फॉर्मूला r square by 2r square. ये बड़ा फॉर्मूला है. इनसाइड वाला यही आएगा. ओके के क्यूब बाई r 3/2 माइनस हाफ r square by कैपिटल स्क्वायर. एंड सेंटर में कितना होगा. सेंटर r वैल्यू कितना होगा. क्रिएट सेंटर. r वैल्यू कितना होगा. स्मॉल r इज 0 और स्मॉल r 0 लगाओ कितना होगा 3/2 k cube by capital. You know k cube by capital is nothing but surface only. So therefore center में 3/2 times that of V at surface, potential due to surface. This one you have to question. Center में 1.5 times more than the surface is there, and inside में potential कितना होगा k cube by capital into 3/2 minus half r square by capital. If you see carefully, potential is proportional to r square. As r increases, what will happen to the potential? As r increases, what will happen to the potential? Increases or decreases? As r increases. Smaller or capital? Smaller. Decreases. Increase means decreases, right? Or decreases. So
as r increases, because minus है ना, ये नेगेटिव वैल्यू मतलब इंक्रीज हो गई तो ये पूरा वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा. ओके, सो ऐसा रिलेशन. एंड सेंटर में आपको मालूम है 3/2 टाइम्स ऑफ vs. नाउ विल ड्रॉ द ग्राफ. बड़ा जो ग्राफ का करेंगे पोटेंशियल वर्सेस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. सेंटर में it is 3/2 times of vs, right? So vc is equal to 3/2 times of vs at surface. इधर से इधर तक डिक्रीज होगा as r increases, डिक्रीज होगा, बट नॉन लीनियर बेस में डिक्रीज होगा. बाद में आउटसाइड तो सेम, v is inverse proportional to 1/r. ये वाला proportional to r squared. As r increases, potential decreases, but non linear wise में decrease होगा. These are the things in the sphere. So surface center में कितना है 3/2 times of v at surface. Center में surface में k cube by capital, outside तो normal है k cube by smaller. Inside वाला फॉर्मूला बैठ करना पड़ेगा. Inside वाला important. Okay, चलो क्वेश्चन. Find the electric work done in bringing a charge q from A to B. Okay, small q, I am bringing the charge from A to B. Charge q distributed uniformly. Total charge is q. Total charge is q distributed uniformly toward the volume. मतलब ये solid non-conducting sphere on it because charge is distributed. So work done. By seeing only you can understand what formula you are using. चार्ज किधर से उधर तक लेके आने के लिए व्हाट इज वर्क डन. आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू टर्म्स में. which formula will use? चार्ज इधर से इधर तक लेके आने के लिए वर्क डन पूछे तो फर्स्ट फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का VB minus VA is equal to work done by external agent in order to bring the charge from A to B upon discharge Q. Okay, VB is nothing but the surface point of that, VB surface point, and VA is at center point. Center point. Okay, मैं क्या करूँगा? V at center को I can write this is V as only surface point, right? Minus center is 3/2 times of Vs. I'm writing in terms of Vs is equal to burden पूछ रहे हैं ना, into Q is equal to work done by external. This only we want to find. Okay. And कितना होगा work done by external agent का? Work done by external agent is equal to Q times of कितना होगा 2Vs minus 3. So minus Vs by 2, right? So Q into minus Vs is how much? Q by 2 common लेंगे. Vs is right? K Q by capital. So it is minus K small q capital Q by 2R. But whether he is asking work done by external agent or work done by electric force. Electric force means right? It is minus of that one. So work done by external agent is equal to minus of work done by electric force, right? So it is K Q Q by 2. Yeah. Options में minus दे देगा.
जल्दी जल्दी में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। नाउ अभी मेजरली हमारी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, हम लोग शेल्स के ऊपर जा रहे हैं। शेल्स का क्वेश्चंस करने हैं, ज्यादा क्वेश्चंस शेल्स का। इसमें थोड़ा कम पूछने वाला है एग्जाम में, ओनली लाइक दिस मास क्वेश्चंस रिगार्ड्स, बट शेल्स का कॉन्सेंट्रिक शेल अर्थिंग करके कैसे करने वाला है, कैसा चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट, एवरीथिंग वी आर स्टडीइंग। ओके चल सेम मॉडल को फिडल देखो। Three conducting shells are there, charges also given QA, QB, QC, and radius also given A, B, C. This first shell, second shell, third shell. I want find the potential at surface A, surface B, and surface C. मतलब first shell में, second shell में, third shell में, surface point में मुझे potential चाहिए। तो first surface A find the potential at surface A. The point P is on this surface. So potential will be there because of three shells, right? V1 plus V2 plus V. Same model. Sriram bolo, for first shell, this point is on the surface or inside the surface? First shell. On the surface. On the surface. So surface point. For second shell, that point is? This point is? Inside or outside of surface? For second shell? It is inside. Inside. And for third shell, this point is? Outside. Outside means bahar. Inside means inside. Which problem is inside? Inside only, sir. So it is inside point. Karo. Aap karo. मैं देखता हूँ. आंसर कितना है? पर फर्स्ट वन कितना है? KQ A by A plus KQ B by B plus KQ C by C. यस आया सब लोग को? हाँ सेकंड वन KQ B by आदि बोलो सेकंड वन। कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हो ना, इसलिए इसको काम में बैठ लिख दो। B point मतलब point P is on the second surface. सिर्फ आपको देखना पड़ेगा आउटसाइड आ इनसाइड आ। आउटसाइड तो स्मॉलर उसको रिमेनिंग पूरा कैपिटल का रेडियस था। आया था सेकंड आसान में बोलो, आप बोलो सेकंड में। KQ A by B plus KQ B by B हाँ प्लस
तीसरा पॉइंट भी है ना? Yeah, KQ's C by C. ओके, हाँ आपको ईशा करण? So that KQ A by C plus KQ B by C plus KQ C by C. हाँ यस, so I'm understanding पोटेंशियल आउटसाइड सरफेस एंड इनसाइड, एक एक पॉइंट में कितना चार्जेस है उतना पोटेंशियल रहेगा। पूरा करो, सब यू गॉट राइट? अंडरस्टूड? यस। 3 concentric metal shells are given A, B, C. उसका रेडियस है A, small a, small b, small c. Surface charge densities are given. Instead of charge, they given surface charge density plus sigma minus sigma plus sigma. The potential of the shell B. मुझे shell B में potential चाहिए। ये मेंस 2018 में आया। पोटेंशियल ऑफ शेल बी मतलब सरफेस में इस पॉइंट में वो पोटेंशियल इज मच। फर्स्ट ट्राई टू फाइंड द चार्ज, देन ओनली यू कैन यूज इट। चार्ज को कन्वर्ट कर। चार्ज कितना होगा एलिमेंट? चार्ज ऑन द सरफेस ए फर्स्ट शेल, सर फर्स्ट शेल पे चार्ज कितना होगा? देखो सिग्मा इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट? So charge is equal to sigma times of area. So sigma इसका कितना होगा? Sigma times of area. Area of a sphere is how much? 4 सर्किल के एरिया, so 4 pi a square, राइट? चार्ज एरिया आ गया। सिमिलरली चार्ज बी फाइंड करो, माइनस से तो माइनस लगाओ। Yes. कॉमन लेके पूरा सॉल्व करके इनसेट सॉल्व किया, पूरा एलसीएम लेके पूरा। LCM also. Okay. हाँ ठीक है। And K also 1 by 4. Yes. Till last. Sigma into A square plus B square plus BC by B by epsilon. A square plus B square, huh? A square plus B square. Oh no, minus B square. Minus B square. Mhm. Plus BC by B आएगा। Plus BC by B. Same model. QB कितना होगा? Sigma times of what is the charge area of this sphere, the second sphere का 4 by B square, and QC will be sigma times of 4 pi C square. और चार्ज आ गया, इस पॉइंट पोटेंशियल will be because of first potential, first shell, second shell, third shell. For first shell outside point, for second shell surface, for third shell inside point. Again इनसाइड वाला कैपिटल यूज करेंगे, आउटसाइड वाला स्मॉलर। तो तीनों के ऐड करने से विल गेट फाइनली आंसर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू
A square minus B square plus BC by 4. This is also JEE mains question. So the consider each one we have to find the charge and we have to find the potential at that point, right? In doubt of subject? Yeah. No. Like this is also JEE mains question. I'll give you options minus 2V, 2V, 4V, and V. A solid conducting sphere of radius A having charge Q is surrounded by uncharged hollow spherical shell of radius B. Okay. So एक solid conducting है, conducting sphere of radius A having a charge Q is surrounded by uncharged hollow conducting spherical shell of radius B. A charge is 0. Zero charge, unchargeable. Let the potential difference between the surface of the solid sphere, the surface of the solid sphere, and that of the outer sphere of the hollow shell. Outer sphere ka is V. Difference between them is V. Then क्या बोला? If the shell is now second case में, the shell is now charged to minus 4Q. मतलब instead of ऊपर 0, I'll put minus 4Q. The new potential difference between the same two surfaces is how much? Right, so V1 मान लो, V2 मान लो. V1 minus V2 is V बोल के दिया. V1 minus V2 is L. So first case में पहले solve करो, substitute करो, क्या आएगा देखने. V1 कितना रहेगा? V1 will be because of only one charge only. Second cell का charge is 0, right? So V1 के जगह में क्या आएगा? For V1 potential on the surface. कितना होगा? V1 के लिए मतलब potential due to this one, but इसके वजह से potential नहीं है, 0 है charge. So it is K Q by A minus. Now second point of potential will be because of this shell only, right? Here no charge. So for this is outside point. So KQ by B. This is B. ये use करने वाला second sentence. तो second वाला use करना. now इसके ऊपर मैं क्या दिया? -4Q चार्ज दिया. Charge. Okay. Now same difference in potential is how much? V1 minus V2 is how much? No. ये आने के बाद some relationship मिलेगा then in terms of V correct. You got a Sarah? So V1 is अभी इस surface में potential will be because of first shell also and second shell also. दोनों ऐड करने का
माइनस दोनों अगेन सेकंड पोटेंशियल में अगेन दोनों करने का सॉल्व करो। सर बी बी देखेंगे तो पोटेंशियल इधर कितना आएगा इस पॉइंट पोटेंशियल इस इसके वजह से सरफेस पॉइंट राइट सो के क्यू बाई ए एंड इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल आएगा दिस पोटेंशियल दिस इज इनसाइड पॉइंट सो माइनस के क्यू बाई और कितना प्लस के इंटू v1 की जगह में हम पुटिंग v1 की जगह में हम पुटिंग प्लस के इंटू माइनस 4q बाई इनसाइड पॉइंट के लिए यूजिंग व्हाट r राइट p माइनस समझ आ रहा है बेटा माइनस नो सेकंड पॉइंट को वैसे फॉर दिस वन दिस इज एक्टिंग लाइक आउटसाइड पॉइंट स्मॉलर यूज करेंगे सो के क्यू बाई स्मॉल इज नथिंग बट b ओनली प्लस for this is acting as surface point only k into minus 4q by surface में capital use करेंगे b okay now if you take minus inside ये minus 4q ये पूरा cancel हो जाएगा क्या बचेगा if you solve this one you get as kq by a minus kq by b this one is what b1 minus b2 but kq by a minus kq by b is not b only. So therefore, it is B only. Okay. So this J means to there, but concept the same. Sure. Next. A hollow uncharged spherical conductor has inside radius A and outside radius B. Okay, A and B is there. A material. Okay, a material is given to you. A positive charge Q is in cavity at the center of the sphere. A small capital Q, a small Q है center में रखा. Okay, find the potential. The distance R from center. R is less than A. R is less than A. मतलब he want the potential at this point P. Okay. इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये पोटेंशियल किस चार्ज के वजह से रहेगा? Potential will be there here. Only one charge is there or any other charges? So ये मटेरियल दिया है ना, मटेरियल थिकनेस मतलब इनसाइड एंड आउटसाइड इज शोइंग राइट. ओके, इसमें whenever you put a charge here, your charge will be induced on inner shell and outer shell. ओके, आप चार्ज लगाने से इनर शेल में भी चार्ज आएगा, आउटर शेल में भी चार्ज आएगा. ओके, उन सभी के वजह से पोटेंशियल भी देयर एट दिस पॉइंट वेट कैलकुलेट. ओके, इसका इक्वल एंड ऑपोजिट इस मटेरियल में इफ आई ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस, इस मटेरियल का इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ मच? मटेरियल का इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कितना? जीरो रहेगा बिकॉज मटेरियल के अंदर होंगे, मटेरियल के इनसाइड. इसके अंदर में लगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा बट मटेरियल के अंदर में तो जीरो. ओके, दैट मींस कि सपोज इफ आई ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस, मटेरियल अंदर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो में चार्ज विल बी जीरो. दैट मींस इसका इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज विल बी इंड्यूस्ड हियर, माइनस क्यू विल बी इंड्यूस्ड. तो ऑलवेज याद रखो ये प्लस क्यू है तो इधर ऑपोजिट चार्ज में माइनस क्यू. नाउ इफ यू कैलकुलेट कितना होगा, इफ यू कैलकुलेट कितना फ्लक्स है बोले तो इनसाइड जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा ना. So that's why minus q will be induced बोल के आपको समझ में आएगा. Okay. Now totally वो क्या बोला, वो totally uncharged spherical conductor should be there. Okay. Outside and ये दोनों ऐड करने से uncharged होने का, then this charge will be how much? plus q. Plus q. ऐसा will be induced, ऐसा induced होगा. Now charges आ गया आपको. ये material का thickness is given, material दिखा है वो लोग. Okay, that's why we are inducing the charges. Okay. Now potential will be because of this charge and this charge.
ये वाला तो पॉइंट चार्ज है, डायरेक्ट फॉर्मूला कैन यूज. इसका तो देखना पड़ेगा इनसाइड आउटसाइड पॉइंट. नो पॉइंट. फर्स्ट वन पॉइंट करो. आर इज लेस देन ए, मतलब इस पॉइंट में मुझे पोटेंशियल चाहिए. Potential at point P. Okay. Because of this charge, the potential is K Q by R. And because of this charge, this point is inside point. So minus K Q by, इसका radius कितना है? A. Okay. And for this charge, this point is acting like inside point. So plus K Q by radius is B. This is the first answer. Now if I try for a second. R is greater than A, less than B. So point P is here. इसमें पोटेंशियल चाहिए, इस पॉइंट में पोटेंशियल चाहिए. Also R distance. So second one कितना है? AQ by D. Yes. Now third one find करो. Outside form. KQ by R. KQ by R. Very good. चल. Now दूसरा form. Two conducting shells A and B of radius R and 2R are given charge 2Q and 7Q. Okay, two conducting shells are given to you. उसका radius is R, another radius is 2R. इसके ऊपर चार्ज 2Q रखा, इसके ऊपर चार्ज 7Q रखा. Okay. If they connected with a wire, ये दोनों में एक वायर से कनेक्ट करो. वायर से कनेक्ट करो. वायर कनेक्ट करने से क्या होगा? What will happen? Tell me. Is equalized. Huh? What will happen? Do the charges become equal? Ripple? No. No, equal. Equal? No. देखो, कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी टोल राइट. Whatever the charge if you put also inside, पूरा charge will be comes under the surface only. Okay. It will go. हाँ, so आराम से उसको हमें पाथ मिल गया बोल के ये चार्ज चले जाएगा. ये 2Q चार्ज will go to surface. So finally कितना होगा? इसके ऊपर कितना चार्ज है इनसाइड में अभी? 0. 0 चार्ज. And here 9. 9G. Okay. Now new charge on each shell. You know new charge. So 0 and 9Q is answer. Okay. Now potential at the surface A is how much? Now इस point में potential बताओ. After shifting उस point में मुझे potential चाहिए. So इसका वजह से तो नहीं है. इसका वजह से this point is acting inside part, right? कितना होगा? K 9Q by capital. So whenever wire is connected, charge will flow from पूरा surface का आ जाएगा.
A metal sphere of radius A is charged with potential V. एक sphere है of radius A is charged with potential V. V is the charge. What will be the potential if it is enclosed by a spherical shell B of radius B and two are connected by a wire? मान लो इसका charge is plus capital. Potential able to charge also is there, right? Now I put the part enclosed by a spherical conducting shell B. Conducting shell B. Okay. इसका radius is B. Okay. What is the potential? I want potential on the enclosed by spherical conducting shell B of radius B and two are connected by a wire. इसका capital. Okay, before capital क्यों है? वायर से कनेक्ट करने से क्या होगा? A वाला इनसाइड वाला क्या हो जाएगा? 0 एंड आउटसाइड में Q चले जाएगा, राइट? No, I want the V dash and V terms में चाहिए. Answer is like this. It will A plus B times of V, B minus A times of V, B by A times of V, A by B times of V. Some relation. So is that potential कितना होगा? इसका potential is K Q by A. Similarly, B find करके some relationship लिखते हैं. Then B dash find करो. Option D. Option D. D. देखो इसका सरफेस में कितना होगा? B dash is K Q by B. So if you divide this by this, you get the answer A by B times of B dash is equal to A by B times of. तो मैंने इसका मॉडल्स और भी है. अर्थिंग करने वाला है. अर्थिंग को कनेक्ट करके सम क्वेश्चंस करने वाला है. देन द पोटेंशियल का टॉपिक में डन हो जाएगा. पोटेंशियल एनर्जी में जाना पड़ेगा. पोटेंशियल एनर्जी 2 और 3 क्लास लगेगा. हो गया तो देन पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरा हो जाएगा. देन कैपेसिटेंस भी अटेंड. ओके.